Namaskar to everyone. The National Education Policy 2020, under the able leadership and guidance of our very dear Education Minister, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, and the esteemed members of the Policy Committee, is a very refreshing and assuring departure from the archaic past of education that India has had so far. It's very forward looking and futuristic in its approach, and the very first look at it tells us that this is what India needs today and the world needs today. It's a trendsetter, a trailblazer for the rest of the world in times to come, is what I feel very strongly. Affordability, accessibility, equity, inclusivity, and quality being the pillars of this policy resonates so much with the Sri Sathya Sai Lokaseva Gurukulam educational group of institutions that we run in the state of Karnataka, Telangana, and Tamil Nadu, with over 35 institutions in 20 districts. And in our institutions, this policy is at work. The education is free, it's available to rural, social, and economically backward children without any discrimination whatsoever, and it talks about integrating vocational training, professional training, and moral and cultural and spiritual values into the mainstream curriculum. The university, Sri Sathya Sai University for Human Excellence, is all set to bring multidisciplinary courses where children can pick and choose based on their aptitude and interest, and all of them are being groomed to become teachers of the future. जब मैंने पहली बार ये पॉलिसी के बारे में पढ़ा और हमें भी कुछ सुझाव भेजने का अवसर मिला, और काफ़ी सुझाव जो हमने भेजे थे वो इस पॉलिसी के अंदर हमें जब नज़र आए तो ये हमारे लिए बहुत ही एक हर्षोल्लास का समय था। बाबा ने अपने जीवन में मौलिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों को प्रधानता देते हुए शिक्षा देने की बात कही है। उन्होंने सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा जैसे वैश्विक मानव मूल्यों को लोगों तक पहुंचाया, और इस नीति के अंदर मुझे ये जब दिखाई दिया कि ये सारे मानवीय मूल्यों का उल्लेख हुआ है तो हमारे लिए बहुत गर्व का और उल्लास का विषय था। Many people may ask, this policy with the new pedagogy of 5 plus 3 plus 3 plus 4 years, which is a departure from the 10 plus 2 system earlier, is it implementable? Will we be able to train such kind of teachers and students, especially after so many decades have passed when we have been working in a certain way? To all of them who may even have an iota of doubt about whether this is a practical, applicable, workable policy, मैं उन सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ चल रहे हैं उसमें ये पॉलिसी आज पहले से ही कार्यगत है, और ये एक आश्वासन उनके लिए भी है जो इसको लागू करना चाहते हैं अपने अपने विद्या संस्थानों में, इन दियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये संभव है, और इसका विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि हम यहाँ रोज़ अपने शिक्षा प्रणाली के अंदर इसे लागू किए हुए हैं और ये कार्यरत है। The education that the country needs today is that which is man-making education, which is what Swami Vivekananda said. Baba said, the end of education is character. चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा ज़रूरी है। इसलिए जहाँ एक तरफ हम उन्हें पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अच्छे मानव बनाने में, अच्छे नागरिक बनाने में, केवल भारतीय नागरिक ही नहीं, वैश्विक नागरिक बनाने में भी हमें उनको सहयोग देना पड़ेगा। और इस बात का उल्लेख इस नीति के अंदर हुआ है, जो बहुत ही मुझे एक तरह से आश्वासन देता है कि हम भी सही राह पर चल रहे हैं। और आज पूरा देश, आज शिक्षा जो मंत्री हैं और उनके सारे जो सदस्य हैं वो भी इसी दिशा में सोच रहे हैं, जानकर हमें बहुत खुशी हुई है, हम बहुत आश्वासित हुए हैं। और आपको भी पुनः ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य है। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब आउट ऑफ दिस पॉलिसी। इट वाज मच नीडेड, इट्स टाइम हैड कम, एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू सक्सीड। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ साथ सुबह का अल्पाहार यानी ब्रेकफास्ट भी दिलाया जाए, इसकी बात कही गई है। और ये भी हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का विषय है, क्योंकि श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट के अंतर्गत आज करीब 5 लाख बच्चों को हर सुबह
ब्रेकफास्ट प्रदान किया जाता है and this breakfast service is being provided across 17 states and 3 union territories in India. We at Sri Satya Sai Annapurna Trust know by our own experience that how important it is to provide the morning nutrition to the children. Especially in India, malnutrition in the children is extremely difficult situation and a big problem that we are facing, which has impact on education, on health, on the overall development of the child. The education policy futuristically thinks about this problem too, and that is a very, very wonderful idea. We at Sri Satya Sai Annapurna Trust are committed to provide morning breakfast to the children and will be more than happy to work with the government in implementing these schemes wherever it is needed. A policy, as it's said, is as good as its implementation. Therefore, with the expertise that we have in the field of education, in the field of breakfast and the healthcare for children, we are more than available to join hands with the government and with the like-minded institutions and agencies to make the dream of this policy real. I always say that the government, the institutions and the society must work together. 3S formula, समाज, सरकार और संस्था, ये तीनों मिलकर काम करेंगे तभी हम इस देश में जो समस्याएं हैं उसको निर्मूलन कर सकेंगे. मैं सारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जितने भी शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको ये आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं. इस नीति को पूरी तरह इस देश में लागू करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं. और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सही जो शिक्षा नीति आपने तैयार की है वो इस देश में पूरी तरह लागू की जाएगी और पूरे विश्व के लिए एक नए उदाहरण के रूप में उजागर होगी. नमस्कार, जय हिंद.